Welcome back to Supersport Park, where Pakistan have just pulled off a stunning victory by 9 wickets, 205 for 1 to go 2-1 up in the series. South Africa putting up 203, and that 205 they've scored. Well, they scored it in 18 overs, 12 deliveries to go. To spare, I should say. This is a record first wicket partnership, 197 for Pakistan. Previous best, Imran Akmal Salman, but some time ago. Excellent work. Really good. Highest successful run chasers by Pakistan. Look at that. That's by some way too. 189 for 6. That's just a couple of days ago. Well, a few days ago in Johannesburg, and they've gone one better here to 205 for 1. Emphatic. Time for the post-match presentation, and let's get downstairs. First of all, to Heinrich Klaasen, who is captain of South Africa. Klaasy, tell me what you have to say about what's gone on there. Yeah, tough to explain. I thought we were about 10 runs short. That was the field in the camp. The wicket was quite good. Once again, just lost maybe a little bit momentum at the back end. And then credit to them, they batted extremely well. We tried a lot of things. They made a lot of good balls look bad. In stages we also didn't bowl well. I think the tone in the field was poor from our side. A lot of misfields, especially in that second over. So yeah, a lot to think about tonight, and we have to bounce back in a couple of days. Tell me what the mood was like after you got 203 and you were at the halfway stage. Was it a bouncy change room that felt, look, this is good and we're well on our way? Perhaps maybe a bit of complacency with many runs on the board? Yes, no? Not at all. We've played a lot of cricket at this stadium, especially domestic cricket, and I've seen a lot of wickets like this, and knowing 200 is not enough on this ground. It's a very difficult ground to defend. So we knew that we had to be on our A game, especially in the field, see if we can get an extra 15, 10 runs in the field just to make that score a little bit harder. And then we have to execute with the ball and see if we can win 5 good overs. So there was no complacency, and the boys were up for it. Like I said, a lot to think about tonight. So 10 runs short says about 210, perhaps 250. Would you say that was par, or do you think that would have been a score that might and should have been a winning score? Yeah, par. I reckon that's definitely a par score. If you bowl very well, it can be a winning score, but you have to bowl extremely well on this field, on a wicket like this, and especially in the field, you have to be brilliant in the field to see if you can manufacture something special. So 100 first 10. 103 second 10. Where are you getting those 20 runs? Where you know, in your assessment, you know, where do you feel you could have pressed more, should have pressed more, should have done better? Yeah, look, the one thing we're guilty of over the last 3 games is not one of our batsmen that went over 50 went on to score a big one. They've done it extremely well, and that's maybe where we can look at and to see if one of those guys can go on and get an 80, maybe 100, especially on wickets like this, to make sure we can capitalise at the back end. Okay, tough one, tough loss to take, I'm sure. Commiserations, and all the best getting up to play that 4th one. Thank you, appreciate it. Heinrich Klaasen, captain of South Africa, now over to the man of the match, and the captain of the winning side. It is Babar Azam. What an innings it was. 122 of 59. He'll have a photo taken as well. Then he'll come along to have a chat. Not to me, to Rambo. बाबर, आपके पास माइक है, आपके पास जगह है, अपनी तारीफ करनी शुरू कर दें आप। हाँ रमेश भाई, पहले तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा अल्लाह ने ये इनिंग खिलाई है। इस इनिंग का मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको प्लान किया था कि यार मेरे हाथ में जो अगर चीज़ आएगी मैं फिनिश करूँगा, तो अल्लाह ने आज वो चीज़ पूरी करवाई है और काफ़ी हैप्पी हूँ मैं। आपकी बैटिंग में ओरिजिनलिटी है, ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलते हैं, उसके बाद रिस्क कम लेते हैं। सो
ये किस तरह से आपने कॉम्बिनेशन को एड्रेस किया हुआ है बाबर, क्योंकि T20 में तो जाते साथ ही चौके छक्के की बात होती है, जबकि 10 एंड ओवर रिक्वायर्ड था। हाँ रमेश भाई, बस यही है कि अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसी को मैं कंटिन्यू करूँ और जो टीम का रिक्वायर्ड होता है उसी हिसाब से मैं गेम प्लान करता हूँ कि अगर एवरेज आपकी 10 की चाहिए तो आपको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ता है, थोड़ी सी रिस्क लेना पड़ता है। तो वो पूरा एक प्लान किया होता है और जैसे रजी भाई ने भी मेरे साथ खेला, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और क्रेडिट देता हूँ। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है रोज़े में, उन्होंने रोज़ा रखा था और उन्होंने आज वो जो बैटिंग की और विकेट कीपिंग की, आउटस्टैंडिंग होता है कि इतना जो हिम्मत है वो आती है क्योंकि उनको देख के मेरे ख्याल से पूरी टीम काफ़ी जेल होती है और काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है उनको देख के। निढाल भी हो जाती होगी थोड़ी सी, मगर क्या ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओडीआई की नंबर 1 रैंकिंग बाबर या ये सेंचुरी? हाँ रमेश भाई, वनडे का भी जो मेरा एक ड्रीम था वो पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और वो एक मेरा काफ़ी देर से ड्रीम था कि यार वनडे में नंबर 1 आना है और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हुआ है। और काफ़ी स्ट्रगल थी उसके पीछे, काफ़ी मेहनत थी, काफ़ी सेक्रीफाइसेस थे और कोशिश यही था कि डे बाय डे अपनी गेम इम्प्रूव करूं और नई चीज़ें सीखूं और नई चीज़ें अप्लाई करूं क्योंकि जैसे आपको पता है कि फास्ट क्रिकेट चल रही है तो उस हिसाब से आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ती है, गेयर चेंज करना पड़ता है और यू नो के ओवर रेट और पूरा आपको लेके चलना पड़ता है टीम को। तो मैं यही काफ़ी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ। पाकिस्तान टीम ने 200 से ज्यादा रन चेस कर दिया पिछले मैच में, यहीं पे 190 का चेस कर दिया बाबर। सो बैटिंग तो क्लिक कर रही है और शानदार तरह से 2021 ईयर ऑफ बैट्समैन अभी तक बना हुआ है। बॉलर्स की क्यों कमबख्ती आ रही है? हाँ बिल्कुल रमेश भाई, मेरे ख्याल से जैसे मैंने बात की थी पहले, जो हमारे 6 ओवर हैं वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को, मिलान और मार्करम को, कि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थ्रू आउट जो 10 ओवर तक वो काफ़ी अच्छा करें। लेकिन मेरे ख्याल से मैं क्रेडिट देता हूँ अपने बॉलर्स को भी, जिस तरह हमने कम बैक किया लास्ट 5 ओवर्स में, तो हमने स्टिक किया 200 में उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमाल बैटिंग कर रहे हैं, आप बहुत सारी यंग जनरेशन के हीरो हैं। आपको ओडीआई स्टेटस मुबारक हो, आपको ये सेंचुरी मुबारक हो, इतनी फ्लॉलेस बैटिंग मुद्दतों के बाद देखने को मिले, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। So you want to summarize what he said then for me? So ODI versus this century. So my question was, which is more important to him? And he says that there's a lot of hard work done